So, Shekhar, how are you today? I'm good, sir. I'm good, sir. Good to know. So, when is your visa interview scheduled? What date? Sir, yeah. So, sir, my visa interview is on 4th of August at 10:30 a.m. 4th of August. So, you already done with your biometric? Yes, sir. Yes, sir. On 30th, I'm done with my biometric. So, what they basically do through your own biometric? Yeah. So, sir, in biometric, like they just took my they just took my fingerprints of all Okay. the 10 fingers, Okay. and they also clicked a photograph. Yeah. Okay. Yes, sir. Yeah. Okay. Good. So, Yeah. did they go through your documents? Some of the documents? Yeah, sir, they just required this passport and this uh, confirmation page. This uh, I forgot its name. DS 160 DS confirmation page. 160. Yes, sir. Yeah. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Nice. So how long it took to complete the biometric process? Yeah, sir. It was hardly about I think only 5 minutes. They just took only 5 minutes. Yes, sir. So how did you go to Delhi? Uh, was it train or Sir, yeah. bus or No, someone? sir. There is a see, as I said, there is a direct bus from my village, and it directly goes to Anand Bihar. Okay, So in Delhi, ISBT. yes, sir. Yeah. Yes, sir. ISBT Anand Uh, Bihar. okay, So one of my friend was there, so I was staying in his room, okay. and on the morning I just took metro and went to this Went to the uh, place. yeah Where Shivaji was Park it? Metro Stadium. Shivaji. Okay. Shivaji Stadium. Yes. That is VFS Center. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. VFS Center. Okay. Nice. I think yeah, you are very close. I think today's first 2 more days to go, and in fourth you're gonna have your interview, right? Yes, sir. Yes, sir. So yeah, today I mean, being your mentor, I wanna act like as a visa officer. Okay, I'm gonna try to give you some hard time. I hope you defend them well. Sure, sir. I will try, sir. I will try. Okay, To the so here best is of my my ability. first question. Yeah. Yes, sir. Uh, what are you here for today? So I'm here for my visa interview, F1 visa interview. Okay, okay. Can I see your I-20? Yes, sir. You just give me Sure. I-20. Okay, Yes, sir. Yes. okay. So what are you going to study in the US? Yeah, sir. I'm going to US for my PhD program in condensed matter physics, and in condensed matter physics, I'm moving in the theoretical part. Yeah, theoretical condensed matter physics. Okay. And what will be its potential applications? Yeah. So, so for now, like the potential application is hard because what kind of work we do, like we just develop theories to explain the observed effects that experimentalists are doing. So our role as a theorist is to develop theories and yeah, this is the kind of work that we do. So it's like the applications are not very very immediate, but yeah, there are applications. What kind of application? So applications, let's say one of the potential application is like the work I'm doing is basically let's say how the quantum computers work. This is one of the kind of application that is also the part of my work that I done in my masters, and also other than this, we develop theories to study uh, the behavior, the like low temperature behaviors of the systems, like how the systems behave when the temperature is reduced. This kind of work we do as a theorist. So what is your current area of research? Yeah. I mean, specialization? So yeah, sir, my specialization is um it's a condensed matter theory, and in that I'm working uh, as a yeah. So this is my specialization actually.
the condensed matter theorist. Yeah. Why did you not opt India for your PhD program? And why Sir, US? yeah. So, sir, one of the main reason is like uh, in India, the people who are currently working in this theoretical domain of condensed matter physics, they're very less, and because more and more people are inclined to like to do the work like nanostructures and materials kind of thing. But the people who are working, who are solely devoted for the theoretical studies of the system and developing theories, they are very less. That's why I am moving to US. And also, the US degree plays a very pivotal role to get a job in India. Yes. Is your program fully funded? Yes, sir. Yes, sir. My program is fully funded, and I have also got one-time fellowship to support my education there. How much is it? Sir, it's $5,000 One time, US yeah, dollars. additional PhD. Okay. How many university did you apply, and how many did you Yeah. get the admission? Yes, sir. So, sir, I applied 11 universities and I got acceptance from two of them. What are those universities? Yeah. So, one is the Arizona State University I have opted for, and another one is the University of Nebraska Lincoln. Why you opted uh, Arizona State, not UNL? Yeah. So, Arizona State University is quite good in ranking as compared to University of Nebraska Lincoln. And more on that, there are currently three professors who are in ASU who are solely devoted to this kind of theoretical studies of systems. That's why I chose the Arizona State University. And also, ASU has about five alumni who are Nobel laureates. So it's quite good. That's why I opted for ASU. Okay. So, what are your plans after graduating a PhD? Yeah, sir. Actually, I wanted to, because in my undergraduate institutions they don't have a sub department in physics that is solely devoted to the theoretical studies of the systems. So I want to start a sub department there, so that students uh, who want to work in this field, they can do the work freely also. Thank you. I'm convinced your visa is approved. Thank you, sir. Thank you. I hope so, sir. I hope it will happen. इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं कहूँगा you're not ready yet. जैसे एप्लीकेशन को बताना लेमैन लैंग्वेज बहुत जरूरी है. ओके, तो तुम्हारा जो भी फील्ड है, Okay, sir. प्रॉब्ली तुम्हारा किस पे काम करने जा रहे हो? आई डोंट रिमेम्बर. Actually, sir, main work is like I'm studying the superconducting properties of nickelates. So, ओके, but I thought कि like इसको एकदम से बोलना it's very नहीं much नहीं, like what because आई एम it's very सेइंग, much deep. technologically you should tell in layman. I'm not going to hear your research. I don't know about it. यदि मैं कहूँ किसी को Yes, आप कोई सेमीकंडक्टर में काम करने जा रहा, if someone uses the word optoelectronics, or I don't know, if yeah, someone uses the word yes, LED, light emitting diode, probably yes, I'm convinced it's useful. तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा पोटेंशियल एप्लीकेशन को लेमैन लैंग्वेज में जस्ट वन वन सेंटेंस में बताना जरूरी है. Okay? okay. So what will you say? So, sir, I can say that like uh, we develop theories to study the low temperature properties of the systems, like the electronic properties of the systems. This kind of work we do because at the low temperature the system behaves in a very different manner. So that's the thing that I want to do. Like So so, one of basically, the I remember talking about quantum computing, right? yes, sir, So you yes, should say, I mean, your research gonna contribute to the development of next generation technology related to quantum technology or quantum computational technology. This should be quantum computing. इतना आजकल लोग जानते हैं, पढ़ते हैं.
Okay. But sir, sir, I read this technical alerts thing. They have Mhm. mentioned that quantum computer is mentioned there specifically. That's why I was fearing to say this अच्छा, term. उसमें क्या लिखा हुआ है? Yeah, sir, these things are mentioned clearly, like quantum computing, superconductivity. So that's Mhm. why I was not using these words. तो I don't know, क्या like. क्या लिखा क्या है उसमें, क्या कह रहा हूँ? Sir, yeah. They were saying कि like quantum computing and the superconductivity, this kind of research can be used potentially in another way, like for the development of missiles, these kind of things. Okay, So okay. that's why So you're I saying, was a bit curious too. okay, okay. So what word you gonna use? I mean, in terms of convincing me. Sir, I can say that uh, low temperature uh, behavior, like the electronic properties, electronic conduction properties, So you can see and some manipulating yes. electronic properties probably. Yes. Mm. I can say that we do yeah, we develop um, computer simulations. We use computer simulations to study the uh, properties of systems, like kind of thing. This is the better Because it's computational simulation, probably yes, modeling, right? And backing experimental yes, data or giving new theories for experimentalists. yes, Yeah, this is yeah. reasonable. Or I can say that yes, sir. Or this also I can say that we develop theories to explain the data observed by experimentalists, Mhm. because it's very important to But your develop the research will be methodologies for the specific, experimental right? results also. So when you say this very general term, Yes, sir. so you have to be specific. Yeah. क्या करने जा रहे हो, right? I think low temperature stuff. I mean, backing uh, those simulation and Yeah. modeling, manipulating electronic properties for next generation. I think Yeah. material. I mean, that should be fine. Yes. Yeah. तो दूसरी बात ये थी, आई वॉज नॉट कन्विंस्ड जब मैंने पूछा तुमसे व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर ग्रेजुएटिंग, क्या तुमने जवाब दिया? Yeah. So I said like I wanted to start a sub department in the physics department of my undergraduate institution, the Banaras Hindu University. That will be solely devoted to do the theoretical studies of systems. Okay. So basically you are telling me you want to come back and Yes, sir. start. तो Yeah. ये वर्ड यूज करो अच्छे से. So I plan to come back to my country India, and then you can Yes, extend sir. कि तुम क्या करना चाहते हो. So that will be very Yeah, sir. specific. After completing my PhD, Yeah. yes, sir. After completing my PhD, I will come back to my home country, India, and then I will start a sub department in my Yes. undergraduate institution that will Yes. solely devoted to this kind of work. Yes. This is, I mean, reasonable. Yeah, I think fully friends हो गए. You have any questions that you want to discuss with me? Um, Sir, uh, is it can it be something like a negative point to mention that since I applied 11 universities and I got only acceptance from two? No, no, no. So यदि पूछते हैं तो how many, then हम उसको तो हाइड नहीं कर सकते हम, right? yes, There is nothing negative. सब जानते हैं कि 10-12 में अप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो 2-3 जगह से ही आता है. yes, sir. तो इसमें Yes, nothing. So you can say uh, I was accepted Arizona State and UNL and finally I decided Arizona State बता रहा है, तुमने अच्छे से बताया है कि उसका रीजन क्या है, तुम क्यों जा रहे हो. yes, ओके, तुम्हारी रिसर्च का जो ओरिएंटेशन है बड़ा अच्छे से मैच करता है, वहां पे तुम प्रोफेसर का नाम भी ले सकते हो. यहाँ से तुम्हारा आजकल yes, बातचीत चल रही है, तुम मीटिंग में yeah, पार्टिसिपेट कर रहे हो. दिस आल्सो पॉजिटिव वे ऑफ. बेसिकली देखो क्या है कि they through I-20 they know it's fully funded program, right? yes, There is no point delaying the visa, right? Though it's quite yeah, random in many ways. आसान है, 2 मिनट लगते हैं. You have all seen, I think. 3 मिनट से yeah, वेरी है, डिपेंडिंग ऑन वीजा ऑफिसर का क्या मूड है. yeah, yes, sir. Why, sir?
it's like I have to work on this something like the applications of my या projects. इम्पोर्टेंट है, हाँ, लेमन लैंग्वेज में बताना जरूरी है। मैं बताया ना, यदि मुझसे कोई बोले ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और लाइट इमिटिंग डायोड और मैं नहीं जानता साइंस, तो आई विल नो लाइट इमिटिंग, लाइट इमिट करती है, तो वी ऑल नो एलईडी 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 एलईडी। Yeah. सो आई सर मीन मुझे सर आई थिंक ऐसा बोलना भी लाइक बिकॉज सर टेक्निकल अलर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें मेंशन है लाइक they are also concerned about superconductivity, they are concerned about semiconductor physics like so so वही मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा बोला जाए कि इससे क्या हो कि वो डायरेक्टली वो टर्म उसमें मेंशन ना हो टेक्निकल अलर्ट्स में, जो तुम कह रहे हो वो कि सेव उनके हो। जो यस यस हैशटैग होंगे कि भाई ये तो नहीं बोल हाँ सर रहा। हाँ सर हाँ वही वही पता है इसमें भी डिबेट है, जैसे सोनम ने तो मटेरियल खूब नाम यूज किया, दिस मटेरियल दैट हाँ मटेरियल, हाँ नथिंग हैपेंड, हाँ in 3 minutes her visa got approved. तो पता है it's way beyond many things, I feel like, and they all know, I mean, US is a immigration kind of country, okay, right from Tesla and right from Sundar Pichai, that's what we have done. So that's the way it is. यस सर Yeah. तो सो कोशिश करो, या जो तुम कह रहे हो, I agree partially. अब look at the case अभिषेक का, क्या चेंज हो गया 1 महीने में कि उसका वीजा अप्रूव कर दिया? That doesn't make any sense, यस right? तो इसमें बिकॉज this is very random in a way. या Yeah. आई अब होप कि सर मेरा भी अप्रूव हाँ हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा, I think it's just a matter of time. हाँ You enjoy the process and you, I mean, all covered. एक तो टर्म जो तुम चाह रहे हो शायद ना बोलो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, I would say. sir I can use because what will happen na ki when I will use that term I can explain that thing very Yeah. very lucid manner, very Yes. layman terms yeah. Yes. Ki like yeah ki we are working on we तो are बल्कि developing मैं तो यही physics कहूँ कि तुम यदि वो यदि रेड अलर्ट में है तो you do theory, right, computational calculation, yeah simulation, yes backing experimental data that contribute in sir many aspects of technology, इस प्रकार से बोल सकते sir actually one of my friend like uska bhi same he is also in PSU और उसका भी लाइक सेम फील्ड है, ही इज आल्सो वर्किंग इन थ्योरेटिकल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। हैं। बात की तुमने सो उससे? उसने जो मास्टर हाँ सर मैंने उससे बात किया। Okay. सो उसने जो मास्टर्स का प्रोजेक्ट किया था सर वो उसका मतलब क्वांटम फील्ड थ्योरी से रिलेटेड था, मतलब Okay. दैट वाज समथिंग डिफरेंट, वेरी डिफरेंट देन द कंडेंस्ड मैटर थिंग। तो Okay. उसने बस यही बोला था कि लाइक जब उससे पूछा गया कि व्हाट इज द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ द वर्क यू आर डूइंग और यू हैव डन, देन ही सेड कि इट्स नॉट because it's not very immediate, because if somebody is working in the string theory then it's very hard to Yes, say true. what is Yeah. the immediate application Immediate अपना but उसका फील्ड बात सही। yeah, Yes. but sir there can be applications in near future नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ एप्लीकेशन अभी हम देख नहीं सकते हैं, करंट समय के साथ चेंज होते हैं, इवॉल्व होते हैं। yes Yes, yes, yes yeah, true. but I will try to come up with some things like Yeah, जो कि उसको convince लगे। yeah, yes convince. Yeah, I think computational काम कर रहे हो, contribute कर रहे हो, fully funded program है, yes nothing to worry about, I would say. Yes. yes क्या पहन के जाओगे? सर मैंने एक शर्ट सिला ली है और ट्राउजर्स एक किस कलर का है? trouser sir like it's all dark it's almost cream color, dark cream color sir। ठीक है। और शर्ट जो है वो वाइट है, मतलब एकदम से वाइट जेट वाइट। दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के सच में जाओगे? नहीं सर मुझे ये मतलब कम करना है। Okay, सर okay. बायोमेट्रिक में इसलिए नहीं कराया क्योंकि बायोमेट्रिक में कुछ ऐसा था नहीं, मतलब अच्छा। बट आई विल लाइक शॉर्ट दिस थिंग्स। Be confident है, और मतलब या सर यस नर्वस ना होना, ना नहीं बिल्कुल नहीं सर। छोटी और जगह सर मैं तो सोच रहा हूँ टाई लगा के चला जाऊँ, इट्स ओके सर। तो अभिषेक ने टाई लगाई थी, अभिषेक ने हाँ ओके तो है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर मैं सोच रहा हूँ कि टाई लगा के चला जाऊँ सर। हाँ। मेरे हिसाब से जो कंफर्टेबल है हो ना, बस रहिए, लगा लो टाई यदि तुमको लगता है कंफर्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगाते हो देन दैट्स ओके टू।
अभिषेक ने लगाया था टाई क्या? नहीं शायद नहीं लगाया था, शायद नहीं लगाया था। उससे पूछ लो। हाँ सर, हाँ हाँ। मैंने तो कोई टाई नहीं लगाया था अपने समय में। सर आपसे आपसे मतलब कैसे क्वेश्चन आपको ध्यान है सर, मतलब हाँ, मुझे याद है। मेरा एक्चुअली 30-40 सेकंड का इंटरेक्शन था केवल। तो उसने I-20 देखा, कहाँ जा रहे हो? वाशिंगटन स्टेट। अच्छा, अच्छा। किस पे काम करोगे? तो मैं शॉकले जो अपने विलियम शॉकले, उनसे बड़ा हमेशा बचपन से रहा हूँ इम्प्रेस। yes, ये मैंने डायरेक्ट बोला था। उस समय इतना नहीं था सोशल मीडिया, इंटरनेट कि सर्च करो क्वेश्चन आंसर। तो मैं बड़ा ऑनेस्ट था, मैंने कहा कि आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय शॉकले, जो हु इन्वेंटेड सेमीकंडक्टर, उन्होंने पूरा टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया। आई वांट yes, टू वर्क इन सेमीकंडक्टर फील्ड। तो 2 क्वेश्चन थे और बोले ओके, ओके, योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। उन्होंने पासपोर्ट के लिए थैंक यू बोल के चला आया। ये 2 ही क्वेश्चन थे। जो ट्रू था हाँ सर, कि शायद आई मुझसे एम भी दो स्टिल वेरी क्वेश्चन पूछ ले। फील लाइक जो शॉकले ने शायद काम किया, जो पूरा सब कुछ चेंज कर दिया उन्होंने, और बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यस सर, उनकी किताब है एक, और मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट यस, यस, यस। सर। एएसयू के भी नोबेल लॉरी वो हैं, मतलब लाइक वो फ्रैंक विल्जन, उनको से अच्छा, 2004 में नोबेल प्राइज मिला था सर। वो किस इज चीज़ में? एलुमनाई ऑफ, he got Nobel Prize in the particle physics, ओह, cosmology in the particle physics में वाह! सर। हाँ, तो और भी सर लाइक देयर आर टोटल 5 प्रोफेसर्स इन एएसयू हु आर नोबेल लॉरिएट्स। सो ये मुझे जब उधर मुझे पता चला, दैट वाज गुड It's a huge सीरियसली। department. Don't forget that was your यस सर, last application, and I pushed you to apply for यस Arizona सर, State. and I applied late, and I was late about And 2 it was days। late. I'm calling from Yes sir, Seoul. Why didn't you apply yet? yes sir, yes sir. And you got that. But like, Yes, yeah, yeah, the last perfect. hope is like I hope this visa I will get, then everything will be fine. Yeah, it should be okay. Then I There can will be, just, there will be no problem. yeah, Enjoy, हाँ, इस process को enjoy करो बढ़िया से, yeah, yes, interact करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, right? yes, ये so, चीज है। yes. तो should not be। कब जा रहे हो? दिल्ली? सर 3 को चला जाऊंगा सर, हाँ सर, 3 को। हाँ, 3 को जल्दी पहुंच जाना, कभी ट्रैफिक Yes, में फंस जाओ। अर्लियर द yeah, बेटर। सर, करीब 24 घंटे yeah, का मार्जिन लेके चलना। हाँ सर, इतना तो हाँ, है, मतलब 23 आवर्स का। हाँ सर, आई विल रीच, मैं चाणक्यपुरी ऑलमोस्ट जैसे 10:30 पे है, तो आई विल रीच, मैं उसको 9:30 9 बजे के समथिंग पहुंच जाऊंगा। एक चाहे दिन मैं पहले। वहीं बैठा रहूंगा, बट हाँ नहीं सर, लाइक मैं दिल्ली तो एक दिन पहले पहुंच जाऊंगा सर। दिल्ली जैसे कि 4 को मेरा इंटरव्यू है, देन आई विल रीच देयर बाय 3rd, लाइक हाँ, शाम तक पहुंच 3 जाऊंगा। तारीख को शाम देन तक पहुंच जाना। चाणक्यपुरी से, यस सर, यस यस, Yes, yes. जहाँ पे इंटरव्यू है वहाँ पर 10:30 का इंटरव्यू है, देन आई विल रीच देयर बाय 9:30 और 9 हाँ, 1 समथिंग। घंटे पहले पहुंच जाना। उस रात में हाँ पासपोर्ट सर, देखेंगे, आपको थ्रू कर देंगे अंदर, है ना? हाँ सर, हाँ। यस, नाइस। और जाओगे कैसे चाणक्यपुरी? ऑटो से? नहीं सर, मैं एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ सर एक रूम ले लूँ उसी के पास, मतलब चाणक्यपुरी के पास, अच्छा। वहाँ पे क्योंकि मतलब सर दोस्त बहुत दूर रहता है चाणक्यपुरी से, तो हाँ, मेट्रो ले से लो। भी सर 2-2.5 घंटे का। हाँ सर, वही। बहुत बहुत दूर है। Yes, yes. हाँ, बेटर है कि रूम ले लो और पास जल्दी में ले पहुँचो लेना। वही। और तो यदि मैं तो कहूँगा उसी शाम को ही जब वहाँ पहुँच जाओ, तो एक बार एरिया भी दिखाना ऑटो से, इन केस। हाँ, यस ऑल्सो अ गुड सर, आइडिया। हाँ सर, चलो। बढ़िया।